Hey, hi everyone. Thank you so much for joining in. We'll get started with the session shortly. We'll just wait a couple more minutes while others come in, and then we'll get started with the session. हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें, या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ, जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Hey, hi everyone. Thank you so much for joining in. We'll be starting with our session now. So if you're coming in here for the very first time, let me quickly give an introduction about what this session is about and what all we usually do here. So this is a part of Apna's Community Exclusive, a series of webinars that we've been doing on a daily basis now. We do these on weekdays from 7 p.m. and on weekends from 3 p.m. The main objective behind these sessions is to help in your professional career growth. So we cover like a wide range of topics that start from, how you can improve your interview, how you can create a better resume, covering different technical topics and helping you upskill and be better positioned while you apply for jobs. So today's session is on resume writing. So we'll be talking about how you can create a winning resume and also a cover letter. And for that, we have Kumpal here with us. Kumpal, thank you so much for joining in. We've already done previous sessions with Kumpal earlier, and this is, I think, the third session that we are doing. So once again, a really, really warm welcome to Kumpal, and we hope to have a wonderful session here. So people who don't know about Kumpal, just one liner that I wanted to say that he has been associated with Apna for the last couple of months. And he has been working as a psychological counselor and also as a consultant in Tiger Analytics. So without any further ado, I think Kumpal, you should quickly introduce yourself and let people know what they can expect from the session. Yeah, thanks, Dipanjan. Hi, everyone. Thanks for taking the time today to join in. So yeah, my name is Kumpal. I've been in this IT industry since the past 8 years. I started my journey as in the pure technical side of things, right? I started my journey as a data engineer, and then I did some core AML projects, and then I realized I don't want to code for 10 hours a day. I want something which is more customer facing, and then I made the switch to the pre-sale side of things. Right now, I do work as a technical sales consultant for AWS. And at the same time, on the personal front, I'm also a psychological counselor. So in my experience, I would have, say, given around 50 odd interviews. I have had offer letters from around 20 companies. So from the experience that I have, right, so when Dipanjan and I were discussing, he was like, okay, why not? Let's take a session about what is the importance of how to create a strong resume and what are the important aspects to consider while you are creating a resume, right? So a job hunt is itself, I would say, a course on how do you find which companies to look after, what to apply, what should your resume look like, how do you get the right ATS score, and all of that, right? So in that case, it becomes very crucial for you to make sure that whatever you are putting on your resume is very important and relevant to what the job is looking for. So in that case, it becomes very crucial. So I have a small presentation which is prepared, which we will cover about the importance of the different topics and what all sections should be there in your resume. We'll also talk about the do's and don'ts on how do you create your resume or your CV, and then we'll see. And then towards the end, if we have some time, maybe we can take a few sessions. We can take a few examples from someone from the attendees
we'll look at their resumes, and then if needed, we can talk about the differences that are needed and changes that are needed, right? I'll pause after a few slides and then stop for questions, but feel free to put it on the chat and then we can address it whenever we address the questions part. So let me just quickly bring up my screen. Yeah, is my screen visible? Yeah, it's visible. Okay, so yeah, we'll talk about how to make resumes which win, right? Your resume should be relevant to folks who are looking for you, and at the same time it should have a brief journey about what have you done. Resume, okay, I see a request to do this in Hindi. Okay, I'll do a mix. I'll do Hindi English both so that everyone gets comfortable. तो आपके रेज्यूमे में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, विच इज मोर रिलेवेंट टू द कस्टमर और रिलेवेंट टू द हायरिंग मैनेजर, उसके हिसाब से विल हैव टू चेंज आवर रेज्यूमे, राइट? मतलब आपका रेज्यूमे एक जेनेरिक टेम्पलेट नहीं होना चाहिए जो बस उठा के डाल दिया तुम्हारा जो कंटेंट था. इट हैज टू बी different for every case or every situation that you apply for. So let's get into it. पहले तो let's talk about the importance of a strong resume, right? अच्छा resume बनाना जरूरी क्यों है आज के दिन में? If you look at any job on LinkedIn or अपना और नौकरी, you will see that on any job which has been posted at least 1 day ago or 2 days ago, you will see that there are at least 10,000 people who have applied to the job. तो राइट नाउ अभी मार्केट इतना बिजी है, राइट, कि सबको जॉब चाहिए एंड एवरीवन इज अप्लाइंग टू व्हाटएवर इज देयर. मतलब ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहाँ पे कोई नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वाला कोई कोडिंग जॉब के लिए अप्लाई करेगा, या फिर कोई कोडिंग जॉब वाला बस जॉब चाहिए उसके लिए मे भी कोई मैकेनिकल वाला जॉब अप्लाई करेगा. So that has been the case since the recent times, right? Everyone is applying for whatever opening is there, irrespective of it being relevant to what they want to do or not. So in that case, a strong resume becomes a very big differentiator, right? तो एक चीज तो ये है कि आपका रेज्यूमे, आपका जॉब, आपका आपका इंप्रेशन है, राइट? जैसे शादी के केस में बायोडेटा बनाते हैं, वैसे सिमिलरली योर रेज्यूमे इज योर ओवरव्यू ऑफ हु यू आर. मतलब तुमने ग्रेजुएशन से लेके कॉलेज के टाइम से लेके तुमने आज के दिन तक तुमने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, उसका एक सिनॉप्सिस या उसका एक हाईलाइट तुम्हारा रेज्यूमे होता है. तो अभी वो रेज्यूमे अगर तुम काफी डिटेल्ड बनाओगे विच इज वेरी रिलेवेंट टू व्हाट द जॉब रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर, then your chances become very high of getting selected for that particular role. और एक एवरेज रिक्रूटर जो होता है, राइट, आजकल मतलब अभी हर एक एचआर के पास से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमे आते हैं, तो हर एक को बैठ के तो चेक नहीं कर पाएंगे. तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एटीएस स्कोर विच इज यूज्ड इन ऑर्डर टू चेक कि आपका जो रेज्यूमे है उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन से कितना मैच है. तो उसमें वो कीवर्ड्स वगैरह चेक किए जाते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्किल्स क्या है, तुम्हारे कीवर्ड्स क्या है, तुमने जो टेक्नोलॉजीज मेंशन की है वो कितने रिलेवेंट है. तो वो सब बराबर से लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके हिसाब से ही तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा, तो तुम्हारा रेज्यूमे भी ऊपर आएगा और फिर तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द शॉर्टलिस्टिंग पार्ट. हायरिंग वाला पार्ट तो बाद में आता है. वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड, तुमसे एचआर बात करेगा एंड देन यू गेट योर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड देन तुम हायर होंगे. बट द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड. एटलीस्ट टू गेट एन इंटरव्यू is what is something that you need to control. इंटरव्यू में जाने के बाद तुम्हारा कंट्रोल बढ़ जाता है चीजों पे. यू कैन ड्राइव हाउ यू वांट द इंटरव्यू टू गो, यू कैन मूव थिंग्स अराउंड, राइट? बट जब तक तुम्हारा रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो तुम्हें इंटरव्यू नहीं मिलेगा, और फिर जब तक तुम्हें इंटरव्यू नहीं मिलेगा तो तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे. तो इसीलिए योर रेज्यूमे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. Recruiters like HRs do take a lot of time on the resume. So let's understand what are the resume basics. कि resume में basic चीजें क्या होनी चाहिए. तो पहले तो resume, as I said, right, it is a overall overview or synopsis about what you are, or it should depict your life journey. उसमें तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है या तुम्हारा गोल क्या है, या तुम्हारा 2-3 लाइनर का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए विच समराइजेज योर एंटायर जर्नी. तुम्हारा एक्सपीरियंस, एजुकेशन और रिलेवेंट स्किल्स होना चाहिए. अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि 3 टाइप के रेज्यूमे भी होते हैं. एक तो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे होता है विच इज बेसिकली तुमने, अगर फॉर एग्जांपल तुमने, जैसे तुमने 2014 में इंजीनियरिंग, या तुमने 2014 में तुम्हारा डिग्री खत्म किया, तो 2014 से लेके आज तक 2024 10 साल में तुम्हारा जर्नी कैसा था. तुमने पहले कौन सी कंपनी में काम किया, वहां
पे तुमने 3 साल काम किया, फिर अगली कंपनी में 1 साल काम किया, फिर अगली कंपनी में 5 साल काम किया, तो वो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के हिसाब से एक रेज्यूमे बनाना इज कॉल्ड अ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे. Second is a functional resume wherein you focus on the skills more rather than the chronology. For example, अगर तुम एक प्रोडक्ट मैनेजर वाले रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारे रेज्यूमे या तुम्हारे जो करियर के टाइम स्पैन में पिछले 8-10 तुमने जो भी काम विच इज रिलेवेंट टू अ प्रोडक्ट मैनेजर किया है उसको तुम ऊपर रखोगे और फिर बाकी का प्रोजेक्ट नीचे डालोगे या स्किप कर दोगे. और फिर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें यू कंबाइन की कुछ चीजें तुम ऑर्डर में लिखो और फिर टॉप में तुम ऐसी चीजें लिखो विच आर मोर रिलेवेंट टू द रोल यू आर लुकिंग फॉर. So आजकल मार्केट में majority is use this chronological wherein you will find everything to be in tenure, but in cases where you are making a move from a role, right? मतलब अगर तुमने तुम्हारा background is not very relevant to the role you are applying, but you have done some certifications, you have done some internships, you have done some projects. So in that case, a functional resume might make more sense. कि although मेरा background relevant नहीं है to the job that I'm applying, but मैंने पिछले 3 प्रोजेक्ट या पिछले 6 साल में मैंने ये कोर्स के रिलेटेड काफी कुछ चीजें की है. सो दैट माइट ऑल्सो बिकम अ की डिफरेंशिएटर इन योर केस विच कैन स्टैंड आउट कि ठीक है ऑल्दो कि ये बंदे ने ये बैकग्राउंड से नहीं है बट उसके पास ये चीजें हैं विच कैन मेक हिम अ गुड एसेट. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड वेरी वेल व्हाइल क्रिएटिंग योर रेज्यूमे कि तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है या फंक्शनल ऑर्डर में बनाना है. दैट इज डिपेंडिंग ऑन द यूज केस एंड द टाइप ऑफ रोल दैट यू आर. फिर अभी एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है जैसे कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज बेसिकली तुम्हारे नाम के नीचे या तुम्हारे डेजिग्नेशन के नीचे तुम एक 2-3 लाइनर लिखोगे कि आई हैव 8 years of experience in the project management space across different verticals like healthcare, retail. I am a very result oriented professional, etc. etc. right? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट इज योर ओवरव्यू ऑफ कि ये इंसान क्या है या कौन है. अभी तुम कोई नॉवेल भी अगर खरीदते हो, जैसे कि ये मेरे पास एक नॉवेल पढ़ी है राइट, तो ये नॉवेल के पीछे भी तुम देखोगे तो ये नॉवेल के पीछे लिखा होगा कि ये नॉवेल किस बारे में है राइट. ये मतलब ये पूरी जो 500 पेज की नॉवेल है उसे एक सिनॉप्सिस है यहाँ पे पीछे, यहाँ पे एक पैराग्राफ जितना कि ये बुक किस बारे में है. तो वो पढ़ के तुम्हें आइडिया आएगा कि विल दिस बुक बी इंटरेस्टिंग टू मी और नॉट. तो वैसे ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि तुम क्या हो और तुम क्या करना चाह रहे हो. अगर तुम वो एक्सप्लेन कर सकते हो 3 लाइन में तो दैट विल इंटरेस्ट द रिक्रूटर एज वेल कि ठीक है ये बंदा सीम्स वेरी रिलेवेंट फॉर दिस जॉब, इसको जो करना है वो ही हम करवाना चाह रहे हैं. तो दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. और आज की दुनिया में तो यू हैव एवरीवन हैज एक्सेस टू चैट जीपीटी राइट. तो तुम थोड़ा सा स्केलेटन दे दो कि मुझे इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट चाहिए तो चैट जीपीटी तुम्हें बना के दे देगा, बी इट फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल, बी इट डेटा इंजीनियरिंग, बी इट फाइनेंस, बी इट एनीथिंग राइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ही वीक है तो अगेन इट विल नॉट स्टैंड आउट मच. अगर तुमने एक जेनेरिक स्टाइल स्टेटमेंट डाल दिया जो सब लोग डालते हैं तो एचआर भी सोचेगा कि ठीक है यार इसके जैसे तो और 500 लोग हैं मेरे पास, मतलब देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस पर्सन. एंड आजकल सबको ही एक यूनिक फैक्टर एक्स फैक्टर चाहिए. तो ट्राई टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एज क्रिएटिव एज पॉसिबल एंड एज एक्सप्लोरेटरी एज पॉसिबल कि वो तुम्हारी जो पर्सनालिटी है उसको रिफ्लेक्ट करे एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, ये एक शोकेसिंग और एक्सपीरियंस करके विल टेक क्वेश्चंस. तो अभी तुमने एक मिशन स्टेटमेंट तुम्हारा आइडेंटिफाई कर लिया और फिर अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस है. अभी एज आई सेड रेज्यूमे या तो तुम क्रोनोलॉजिकल बनाओगे या तो फंक्शनल बनाओगे. तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड कि हाउ डू यू वांट टू लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस. अभी तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट है तो कीप इट इन क्रोनोलॉजिकल. अगर तुमने कुछ अलग से किया है विच इज नॉट रिलेवेंट टू व्हाट यू हैव बीन डूइंग देन कीप इट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और कीप इट इन द फंक्शनल ऑर्डर. उसमें try to make it very precise bullet points. मतलब do not write long paragraphs की in my role at TCS I was responsible for managing ये इतना बड़ा बड़ा मत लिखो. Keep it very short. सीधा bullet point लिखो, responsible for leading a team of 5, responsible for uh, delivering 5 dashboards, जो भी. तो उसमें your bullet point should start with very typical action verbs like I delivered, I promised, I built. वैसे ही स्टार्ट होगा. एंड एलिमिनेट ऑल द फिलर वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स दैट यू वांट. डायरेक्ट तुमने जो किया है उसको लिखो. एंड बेस्ट केसेस इफ यू कैन क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स विद नंबर्स एंड अवार्ड्स. अभी तुमने अगर कोई डैशबोर्ड डिलीवर किया है या तुमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे कस्टमर का प्रोसेसिंग टाइम तुमने 2 घंटे से आधा घंटा कर दिया तो मेंशन दैट कि reduce the compute time
by 60%. वो numbers is something that will stand out because although meaning same होता है, 2 घंटे से आधा घंटा करना या मतलब 2 घंटे से 1 घंटा करना is reduction by 50%, but reduction by 50% पढ़ के it always feels better rather than me doing the calculation कि 2 घंटे से 1 घंटा किया मतलब 1 घंटा बचा. So in that case, always quantify the numbers. Leader team ना मत लिखो. Leader team of 5 people, 6 people, 10 people, जितने भी लोग थे वो लिखो. As many numbers as possible that you have. अगर तुम सेल्स रोल में हो तो लिखो कि तुमने कितने कोल्ड कॉल्स किए थे, कितने कन्वर्जन हुए, कितने फर्स्ट कॉल्स हुए, कितने की डील साइन हुई, वो नंबर्स लिखो. ऑब्वियसली एग्जैक्ट नंबर लिखना जरूरी नहीं है because that might be confidential, but you can always mention a ballpark number. So that will always help you to stand out कि भाई ये जो बोल रहा है इसके since there is numbers, there are lesser chances कि ये bluff कर. मतलब फॉर एग्जाम्पल, और फिर योर नंबर्स वुड ऑलवेज बी रियलिस्टिक, राइट? अभी तुम ऐसा नहीं लिख सकते कि मैं सेल्स में था, मैंने 10 लोगों को कॉल किया और मैंने 10 डील क्लोज कर दी, बिकॉज दैट इज नॉट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज लेस देन 1% ऑफ कन्वर्जन. तो तुम बोलो कि मैंने 15 लोगों से बात की और 1 डील क्लोज हुआ, तो दैट इज एक्सेप्टेबल की मतलब इतना ही होता है कन्वर्जन. तो you need to mention those numbers which are realistic, which are true, and which is something that you can justify. अभी वो इंटरव्यूअर तुम्हें पूछेगा तो you should be strong enough in your own sense कि तुमने जो लिखा है कि तुमने एक डील कन्वर्ट किया, वो कैसे कन्वर्ट किया, उसके लिए तुमने क्या क्या किया. यू शुड हैव योर एंटायर रोड मैप वेरी क्लियर इन योर माइंड. अगर वहां पे तुम थोड़ा हिचकिचाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये तो कुछ बना बनाया है, इसने कुछ किया नहीं. तो वॉट एवर यू राइट हैज टू बी वेरी ट्रू एंड यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट. ठीक है, लेट्स pause for questions. Let me look at the chat. Okay, someone is asking how to create resume for fresher. आगे वो कवर होगा प्राशु, फ्रेशर के केस में क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए. We'll talk about it. जैसे अभी का नेक्स्ट सेक्शन इज ऑल्सो अबाउट एजुकेशन. तुमने कॉलेज में कोई फेस्टिविटीज में पार्ट लिया हो, तुमने कोई सर्टिफिकेशंस किए हो, तो उसके बारे में लिखना चाहिए. Okay, I studied mechanical engineer, but I want to work in IT. I am complete a course. How to resume? Can you suggest some free website for resume preparation, which is friendly and looking cool? I'm not sure, Siva, about the websites, in which website will be able to help you do that. But as I said, right, create a functional resume in which you talk about the course which is in the IT field, and then you start applying to companies because that is something that will be highlighted. I am getting answer from recruiter that I am overqualified. You cannot afford you, and you will get back to you. I am 46, 13 plus years experience, video conferencing technical support. So Mahindra, maybe you are not applying for the right role, right? So apply for a role which is higher than what you applied for, and maybe that can make that difference. If they are saying that you are overqualified, and if they are saying we cannot afford you, then maybe you'll have to check on the expectation that you are bringing onto the table and what is the company that can afford you. Prudvi is asking what are action verbs I can use. Prudvi, you can use words like did, built, created, developed, summarized, and all of those, right? You can just Google it, so it is okay. Gaurav is asking, I don't have any certification, so what can I do? So write about what you have done in your academics, in your cultural events. If you still have time, do some certifications, right? It will be helpful. Resume for civil self-employed to IT job. So in that case, you should look at how you can add value to the IT field, right? So if I am someone from the IT industry, I would look at like, okay, you are a civil engineer who is self-employed, what value can you add? So you will have to do that research on your case to see what is the value that you can bring onto the table. So please do that. Dance or salesman, Impulse Suzuki, 3 months experience. I am not sure what that means. Chat GPT. Yeah, Prashant will cover those in the end. Okay, let's get back. Yeah, just adding one small thing. So people who wanted to know about a website where you can create resumes and all. So I've attached a link of a resume builder that Apna has created. So you can try it out. It has like it enables you to create a resume using AI and also like check ATS friendly score and all. So you can try it out. I mean, there are obviously other websites as well. You can try those out as well. But this is something that we've created for specifically for college graduates and freshers. So you can definitely give it a try. I think this should be helpful for your CV activities. Yeah.
Perfect. Yes. So I think someone on the chat had asked, right, what website tools can be used for resume making. So definitely try out the link that was shared by Dipanjan on Apna itself. You have this, so please try that. So now this is important for freshers, right? Emphasizing for education. So now अगर तुम fresher हो और तुम्हारे पास कोई मतलब you are a recent graduate, तो first list your educational qualifications. You write about कि तुम्हारा semester by semester या year by year performance कैसा रहा है. Include any awards that you would have received. तुमने कोई projects किया है, paper publish किया है, तो उसके बारे में लिखो. And at the same time, if you are an experienced professional, it might not make a lot of sense to talk about the semester wise breakdown. You can just write your overall CGPA. You can also maybe mention the project if it is relevant to the field that you are doing. So that is something that you can do. For freshers, it might make also sense that अगर तुमने कोई cultural event वगैरह में part लिया हो, like अगर तुम जैसे मैं मेरे college के publicity team का HOD था, तो that tells that you have the ability to do public speaking. तो अगर तुम public speaking related role जैसे कोई BA के लिए apply कर रहे हो, तो that might work in your favor. So try to look out for the roles that you feel are interesting and aligned to you. उसके बारे में पढ़ो, उसका job description पढ़ो कि what is the expectation out of you, and then try to relate it back to what you have done in your college. Right? College के 3-4 साल में तुमने जो किया, उसका कोई ना कोई एंगल तो होगा. जैसे अगर तुम्हारे पास एक टीम थी फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और वो टीम को तुम मैनेज कर रहे थे, दैट इज योर टीम मैनेजमेंट स्किल. वो टीम मैनेजमेंट स्किल इवेंचुअली तुम्हारे काम आएगी. So try to identify ki how, what have you done in your college life? How does that tie back to what the role is looking for? And then uske hisab se write down those skills as a fresher. And then list down your projects. तुमने किया हो, मतलब it can be a collaborative project, it can be an individual project. So do write it down. And then coming to highlighting your skill, right? Abhi skills, there are multiple types of skills, right? Personal skills, people skills, technical skills. So abhi, you should always have a combination of your hard and soft skills. It should not be only technical skills. At the same time, you also need communication and business and presentation and storyboarding kind of skills. At the same time, सिर्फ वो skills से भी नहीं चलता. You also need some technical skills, which is like Excel, PowerPoint, and then some language of sorts of something on those lines. So try to align it with the job description. अभी तुम्हारा job description अगर तुम एक product manager role के लिए apply कर रहे हो, तो you need to check कि एक प्रोडक्ट डेवलपर क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है. उसको अभी प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू डू क्वार्टरली बिजनेस रिव्यूज, मंथली बिजनेस रिव्यूज. तो वो तुम्हारे स्किल्स में होना चाहिए कि तुम्हें क्वार्टरली बिजनेस रिव्यूज करने आते हैं, तुम्हें उसका प्रेजेंटेशन बनाना आता है, स्टोरी बोर्डिंग करनी आती है. अगर वो नहीं है तो वो चांसेस है कि भाई मतलब इसके अलावा भी बेटर क्वालिफाइड लोग हैं जिसको वी कैन टॉक अबाउट. तो ट्राई टू डू दैट. ओके, एडिशनल सेक्शंस. अभी ये हो गया, तुमने अपना करियर के बारे में लिख दिया एंड तुमने तुम्हारा एजुकेशन भी लिख दिया. उसके बाद क्या लिखे? सर्टिफिकेशंस लिख सकते हो, अवार्ड्स लिख सकते हो, वॉलंटियर वर्क लिख सकते हो, तुमको एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो वगैरह, तुम्हारी हॉबीज लिख सकते हो. बट अगेन ऐसा नहीं हो कि तुमने हॉबीज के बारे में एक सेक्शन लिख के हॉबीज के बारे में 15 लाइन लिख दी, विच इज नॉट वेरी लेवल. राइट? इट इज ओके टू मेंशन, बट अगेन इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग. तो जितना रिलेवेंट है उतना ही लिखो. एंड देन अगर तुम्हारे रेज्यूमे में तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पेस बच रही है, तो यू कैन ऐड दीज सेक्शंस, जिसके बारे में यू कैन ऐड मे बी 1 or 2 लाइंस. बट एट द सेम टाइम दैट शुड नॉट ओवर पावर योर रेज्यूमे कि यही सबसे ज्यादा जगह ले रहा है या यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ले रहा है और इसके कंपैरिजन में तुमने जो काम किया था दैट इज नॉट होल्डिंग एनी वैल्यू. देन कम्स द फॉर्मेटिंग वाला पार्ट. तो आई पर्सनली हैव अ वेरी क्रेजी नैक फॉर फॉर्मेटिंग. राइट? अगर मैं भी जब इंटरव्यूज लेता हूँ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग एरर इन द रेज्यूमे, इट थ्रोज मी अवे कि मतलब ये बंदे ने अपना रेज्यूमे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की है, जहां से कुछ भी उठा के कहीं से कुछ डाल दिया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर रेज्यूमे इज वेरी प्रोफेशनल. तो अपना एक लेआउट अच्छे से ढूंढो. यू कैन यूज अ गूगल वर्ड डॉक्यूमेंट या यू कैन यूज ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल. But make sure your entire resume is very clean and professional looking. उसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इमेजेस भी नहीं होने चाहिए. इट शुड बी वेरी फॉर्मेटेड. सब बुलेट पॉइंट्स एक ही लाइन में होना चाहिए, सब सेंटेंस एक ही लाइन में खत्म होना चाहिए, पूरे रेज्यूमे में एक ही टाइप का फॉन्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहीं पे कैलिब्री है, कहीं पे टाइम्स न्यू रोमन है. बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स वगैरह सही से लो. प्रॉपर स्पेसिंग दो बिटवीन पैराग्राफ्स. ऐसा नहीं कि पूरा टेक्स्ट से भर दो. तो मेक श्योर यू अंडरलाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बोल्ड कर दो तुम्हारे इंपैक्ट्स वगैरह, but ensure it is very formatted.
मतलब चाहिए तो 4 लोगों को दिखाओ, प्रेजेंट करो, एंड मेक श्योर दैट इट इज एज फॉर्मेटेड एज पॉसिबल, राइट? बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू लुक एट. मतलब मेरे सामने भी अगर कोई रेज्यूमे आता है, तो before actually reading anything, in fact, before even reading the name of the person, the first point of view that I look at is the formatting. कि resume कितना arranged है या कितना neat दिख रहा है. And then we go into the details कि कौन है, क्या है, कहाँ से है, कौन सा college है, etc. etc. So make sure that your resume is 1000% formatted, not even just 100%. And tailoring your resume, right? The one problem that I've seen is that आजकल, as I said, right, everyone is trying to apply to whatever is available. So that becomes a challenge. तो लोग रेज्यूमे बना लेते हैं और फिर जो जॉब दिखता है उसमें अप्लाई कर देते हैं वही सेम रेज्यूमे से. तो अभी तुम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर तुम कोई डेटा इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तुम कोई प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो योर रेज्यूमे कैन नॉट बी द सेम. मतलब हर एक रोल का एक्सपीरियंस अलग चाहिए, हर एक रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग चाहिए, हर एक रोल्स का स्किल्स अलग चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट हैव अ जेनेरिक स्टोरी कि भाई मैंने तो यही किया पर मुझे कुछ तीसरा ही अभी जॉब चाहिए. So it is very important for you to tailor make your resume based on what you are trying to apply for. तो अभी तुम एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल अगर अप्लाई कर रहे हो, तो योर रेज्यूमे एंड योर जर्नी एंड योर स्टोरी शुड टॉक अबाउट कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए अच्छा कैंडिडेट बनाती है. तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरे रेज्यूमे में ऐसी क्या चीज है जो एज अ बिजनेस एनालिस्ट वुड बी इंटरेस्टिंग, और फिर तुम उसे हाईलाइट करो. अभी एज अ बिजनेस एनालिस्ट तुम लिखोगे कि मैंने कॉलेज में 15 सॉफ्टवेयर बनाए थे, तो दैट इज नॉट वेरी रेलेवेंट, राइट? तो फिर तुम भाई सॉफ्टवेयर जॉब कर लो. तो जो जॉब के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव योर रेज्यूमे अलाइन टू दैट जॉब. एंड एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड कि डू नॉट गो इन टू दिस वाइल्ड फायर, राइट? कि जो भी जॉब दिख रहा है अप्लाई कर देते, देखा जाए. फाइंड आउट द रोल दैट यू फील इज एक्साइटिंग टू यू. कि मेरे को भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है, या मेरे को डेवऑप्स इंजीनियर ही बनना है. उसके हिसाब से अपना रेज्यूमे बनाओ, और फिर डेवऑप्स रिलेटेड जो भी रोल दिख रहा है वहां पे अप्लाई करो. आई वुड ऑनेस्टली से कि कोई कमी नहीं है डेवऑप्स. मतलब कोई भी रोल तुम चूज करो, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे बस पूरे इंडिया में 10 ही जॉब अवेलेबल है. हर एक पर्टिकुलर रोल की एटलीस्ट तुम्हें 1000 लिस्टिंग तो मिल ही जाएगी. और वो 1000 लिस्टिंग में से एटलीस्ट तुम्हें अगर 50 इंटरव्यू भी बनते हैं, दैट इज लाइक 2%. तो 50 में से अपने को तो एक ही कन्वर्ट करना है. तो वो तो बहुत ज्यादा कन्वर्जन स्केल है, राइट? तो तुम पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम अभी क्या हो, तुम्हें क्या रोल एक्साइटिंग लगता है, तुम्हें क्या रोल चाहिए, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर करियर ट्रैजेक्टरी एज वेल, राइट? कि अभी अगले 5 साल, अगले 10 साल बाद तुम अपने आप को क्या करते हुए देखना चाह रहे हो, उस हिसाब से अपना रेज्यूमे बनाओ. एंड देन वो रेज्यूमे को मैच करो जॉब डिस्क्रिप्शन से. जॉब डिस्क्रिप्शन में देखो क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना रेज्यूमे चेंज करो और फिर अप्लाई करो. एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट बेटर रिजल्ट्स देन just applying randomly to whatever job you find there. Okay, let's again wait for questions. Um, ATS score is going to be provided using your tool that the Panjan can answer. If I don't do anything in college because I'm can interview, can I face experience for culture or anything? Honestly, Gaurav, मतलब I would not recommend you do that, because अगर भले ही तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम पढ़ाई कर रहे होगे, तुमने कोई सर्टिफिकेशन किया होगा, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू डू दैट. अगर इफ यू स्टिल फील कि तुम्हारे पास कोई वैल्यू ऐड नहीं है, तो इफ यू आर सेइंग यू आर एन इंट्रोवर्ट, तुम फिर अगर तुम फेक चीजें डालोगे तो तुम उसको डिफेंड भी नहीं कर पाओगे, राइट? अगर तुम्हें इंटरव्यूअर पूछेगा कि तुमने इसमें क्या किया था, और अगर तुमने वो नहीं किया है, तो देन इट माइट रेज अ फ्लैग कि ये भाई तो जवाब भी नहीं दे पा रहा कि अगर इसने ये कैसे किया है. तो आई वुड से कि फेक चीजें मत डालो, तुमने जो किया है वो ऑनेस्टली देखो, एंड देन थिंग्स विल वर्क आउट. ओके, मूविंग ऑन. कॉमन रेज्यूमे मिस्टेक्स, राइट? तो ये हम एंड में भी एक बार डिस्कस करेंगे, बट व्हाट आई हैव सीन इज बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक्स करते हैं लोग. जैसे कि खुद का नाम का स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, खुद का डेट ऑफ मतलब ईयर ऑफ ग्रेजुएशन गलत लिख देते हैं, कॉलेज का नाम गलत लिख देते हैं, कंपनी का नाम गलत लिख देते हैं. तो मेक श्योर तुम अपना रेज्यूमे शांति से बनाओ,
उसको 5 बार, 10 बार, 15 बार पढ़ो, किसी और से भी रिव्यू करवाओ if needed, and then make sure that your resume is very appropriate in terms of the language and the role that you're looking for. अगर तुम्हारा रेज्यूमे में समझो फॉर्मेटिंग सही नहीं है, फॉन्ट बहुत वियर्ड सा है, तुमने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बहुत ज्यादा लिख दिया है, तुम्हारा तुम पिछले 8 साल से एक ही रोल कर रहे हो, तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, तो ये सब चीजें फ्लैग हो जाती है रिक्रूटर के माइंड में कि भाई कुछ कुछ तो अजीब है यहाँ पे। तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो सारी चीजें तुम चेक करो बिफोर क्रिएटिंग योर फाइनल परफेक्ट रेज्यूमे। ओके, कवर लेटर के सेक्शन के पहले अगेन while pause for questions. Okay, I see some in the chat. Upgrade knowledge Microsoft Power BI. How is cyber security today? Cyber security is a very interesting market, Vijay, today. मतलब with everything going digital right now, all the companies have a added emphasis towards how to protect their data. So cyber security is a very interesting field. Then there is the feedback form. Thank you for the suggestion. Nice. Any specific font? Prithvi, you can use the standards, Arial, Calibri, वगैरह, but do not use fonts like Comic Sans and all of those. Arial, Calibri, Poppins, those are the ones which you can use. Any other questions before I move on to the cover letter wala section? Yeah, you can unmute yourself and ask questions also if you have any question so far. अगर किसी को कुछ सवाल है आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। Hello. Yes, Vijay. Hi. Well, what I wanted to ask you is, well, I'm right now I'm pursuing my degree in Amity University, and I mentioned that I have got lost you, few Vijay. awards also. Okay. Just 3 weeks to go. My exam is there, second year, Okay. and I have experience for 4 years or Okay. 6 years. Well, what I wanted to tell you here also, I have upgraded my skill sets to Azure and VMware. I have knowledge on virtualization. I just wanted to have of Microsoft Power BI and other. What is the market today and what is the growth of it? That is what I just, and please update few new technologies in the Apna app. जो देखते हैं ना, जो नया देखेंगे तो you will get enthusiastic, and जो पुराने वही आता है। मैं जो देखता हूँ टेक्निकल सपोर्ट एंड वहाँ पर लिखता है you are aged, we are not going to take you. Why? Age is not the criteria over here. Your So I'll quickly willingness, answer that question. So your it's willingness is to grit. hello, Vijay, can you hear me? Yes, sir. Yeah. So what I'm saying is कि it's completely up to the No. What I am trying to tell you, when I attended one of the interview over here, they told me you're aged. I said age is not the criteria. You should have the willingness. Then only you can able to do it. I'm Got right it. or wrong? You tell me. No, I completely agree with you. But what I'm saying is that this session particularly is not like it's relevant to resumes and CVs. So we'll try to keep it related to that. I'll later on share a feedback form also if you want to share a specific feedback. Well, my point is valid point. Yeah, I completely agree. But again, like I mentioned, this session particularly will not be. Yeah. No. Last but not the least, what I'm trying to ask you is, if you're going to attend any of the interview, age is not the criteria. Suppose if you are going to climb a Mount Everest, you should have the willingness. Yes or no? That's all. That's Yeah, it. sure. That's I all agree. I agree. That's not a problem. Thank you. Yeah. That's Sure. Yeah. But they will not ask your age and all, me? right? No? Yeah. Excuse me, myself Hare Ram. Yeah. Please go ahead.
I have a small question with regard to resume writing and CVs. Sure. I'm actually 52. Based on age, based on current style, there are different styles of writing resume. From HR point of view, I want to understand sometimes few HR will see that only the experience part. With that opinion, few candidates will write the experience first, then the earlier experience, then the earlier experience, then the graduation, then the schooling. So Correct. normally, as according to you, which one is the preferred? The chronological order of education, then the experience, or the latest one, the first? Which one you prefer from The your point? latest one, the first. So as I had given the example, right? So if I graduated in 2014 and right now in 2024, what I'm doing, so it should be 2024, 23, 22, and so on. The latest most should be on top because that is what the HR would look for, right? If you're moving from one role to the another role, what is the role that you are doing? What went wrong there is what the HR would want to know. So having the latest role on the top of your resume would make more sense. Thank you. Thank you so much. Okay, let's. So on chat, Siva has asked, can we add hobbies in resume like book reading? Again, on a fresher level, it makes sense. But once you are, say, maybe an experienced professional, try to ignore those because you'll have other better things to write those. So now we'll talk about cover letters. So in some job descriptions or some job applications, you'll find that a cover letter is a mandatory field. So in that cases, a cover letter would be say a 1-pager or maximum 1.5, 2-pager, which talks about Hello. Yes. Am I audible? Sorry to interrupt actually. In the previous session, I had to ask the question. But the thing is like, I'm a, if I have a resume which consists of my work experience and my educational background, my projects and kind of another stuff. But the resume is like, how many pages does the resume must be? It should be, I would say, it should be 1 page or maximum 1.5 page, not beyond that. So not one of it. Not it is like at most 2 pages. It has to be there. Minimum has to be, say, like maximum has to be 1.5, 2 pages. That's it. Just like with 2 pages, we have to get the information within it. So like how Yes. to evaluate what to keep, because if I'm having a work experience or some kind of stuff, if I gotta see. So like I have worked in a lot of different companies from kind of from my graduation or whatever, a lot of different companies and a lot of different fields and all this stuff. If I add up on Right. all of this stuff, it's got to be really more. So it makes sense, like based on what you're applying for, right? Whatever you feel is the most relevant, only keep that. Having everything on the globe or everything that you've done might not make sense. Okay, even the work experience can be taken of what is relevant and what is not relevant. Because it is a chronological manner, we can't say, right? That's why it's chronological you can manner. maybe like for whatever is relevant, you add maybe 4 bullet pointers, but for something that is not relevant, you add only 1 bullet point. So that is how you can mix and match. Okay. And coming to, I think coming to, I love technology at a lot of way actually, because I love so much of innovation, especially innovation in the field of software oriented programming stuff and all this kind of a stuff. Right. So if I want even to specific like industry also, like I doesn't only want technology when it is not applied to the industry. So is there anything sort of such kind of a like a certification or something else which is the industry relevant? Okay, if you kind of focus on retail, automobile, or whatever the information technology and related stuff, is there any certification regarding that kind of stuff? So there are a lot of industry specific certifications also that happen. You can check on Udemy, Coursera. You'll find a lot of courses that happen. And if you're looking to become a subject matter expert in a particular industry per se, then I would definitely recommend you do that. But I think SMB is definitely gonna have to their masters and all this kind of stuff. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Yes. So cover letter maybe
cover letter is basically a view about which tells you what the differentiator is, right? Abhi resume to everyone has, but this one page is your opportunity to tell ki how are you different and how are you well suited for that particular role. So based on the job description, again, you can write ki if the job is looking for someone who has had experience leading with a team, then tum 2-3 line mein explain karo ki how did you manage a team? How did you resolve any conflict? How did you manage resource allocation on of those angles? So it is very important कि job description में जो तुमसे expectations है, तुम उसके बारे में short में describe करो कि वो तुमने expectation कैसे fulfill की है. Again, same thing. Formatting is very much important. अंदर क्या लिखा है that comes secondary, but it should be very important that your cover letter is also very well formatted. It should be aligning with your resume style. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने resume में से में भी तुमने एक columnar structure follow किया है और यहाँ पे तुम्हारा एक row wise structure है. Make sure that it is aligned, the font size, the font style, the layout, जो section breaks वगैरह है, it is aligned with your resume. और उसका length भी again, as I said, should be around 1 page and not more. And now coming to the practical tips, right? Research the company that you are applying for, research for the role that you are applying for. तुम किस मतलब 90% of the time when I ask someone कि why do you want to join my company, उनके पास बहुत जेनेरिक सा आंसर होता है कि मैंने सुना है कि कंपनी बहुत अच्छी है. That does not help. You should always have a very specific pointed answer कि I like this role challenges me, कि ये रोल में ये चीजें मुझे अच्छी लग रही है. वो अगर तुम जस्टिफाई कर सकते हो तो that is something that will make you stand out. Use your networks and referrals. LinkedIn पे देखो वो कंपनी में कौन काम करता है, उनको मैसेज करो, उनसे पूछो कि कंपनी का कल्चर कैसा है, उनको वो पसंद आ रहा है कि नहीं, and then ask if they can refer you. Referral always takes a very higher precedence than someone who's applied from a normal job portal. अप्लाई करो, फिर एचआरस के साथ फॉलो अप करो, इंटरव्यू के पहले उनको कॉल करो कि हाँ मैं रेडी हूँ, इंटरव्यू के बाद कॉल करो कि इंटरव्यू हो गया, अच्छा गया, 2 दिन बाद फॉलो अप करो कि क्या हुआ, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स. उनके साथ हमेशा टच में रहो. अगर तुम्हारा जॉब सिलेक्शन नहीं होता है तो भी इन टच. मे बी नेक्स्ट ईयर, 2 साल बाद, 5 साल बाद तुम कोई और कंपनी में होगे, वो एचआर भी कोई और कंपनी में होगा, तो तभी वो नेटवर्किंग कैन हेल्प यू. एंड देन अपने एप्लीकेशन ट्रैक करो. अगर कोई एचआर तुम्हें रिजेक्ट करता है तो थैंक यू बोलो और फिर समझो उनसे कि क्या रीजन था रिजेक्शन का. वॉज इट इंटरव्यू में तुम्हें कोई सवाल नहीं आ रहे थे, वॉज इट बजट, या क्या रीजन था. दैट विल हेल्प यू इम्प्रोवाइज ऑन योर सेल्फ. तो मैं भी जब जॉब स्विच कर रहा था तभी मैंने एक एक्सेल बनाया था मेरे लिए खुद के लिए कि मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कौन से दिन पे कौन सा राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, कौन इंटरव्यूअर था, उसने मुझे क्या क्या सवाल पूछे थे, मुझे उसमें से कौन से सवालों का जवाब नहीं आया था, ये सब मैं मार्क करके रखता था. देन आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट दैट सो दैट नेक्स्ट टाइम सेम सवाल आने पे मैं वापस गलत जवाब ना दूं. तो दैट इज हाउ यू कैन ओन इम्प्रूव योर सेल्फ एंड दैट इज हाउ इट विल मेक योर एप्लीकेशन बेटर. Abhi, I have some slides in the, I have some, I think 6-7 slides, which are about the common mistakes that happen in a resume, right? So I'll bring it up on the screen and then you guys can put it on the chat on what do you feel is wrong in that particular resume, and then we can discuss. Before that, I'll just look at the questions in the chat. Resume should be 1 page or 2 page? 1 page. क्या हिंदी हो गया? If I need to change my career, should I career from non-IT BPO to IT? Should I add my experience in technology or should I make a functional resume? A functional resume might make more sense in terms of what you have done which is relevant to the IT field. So I would suggest a functional resume. Size bullet 10 or 12. Now it depends on your content. If everything is fitting onto your resume in 1 page with the size 12, then yes. If not, then choose 12. Based on that, you can change. Your screen will be visible in 1 minute. I hope you can see it now. So, okay. This is the first thing. Okay. Yeah, okay. So what is it that you see is wrong in this particular resume? Yeah, again, ये example मैंने online ही उठाया है. But what is it that you feel is incorrect in this particular resume? Yeah, please feel free to share your
answers and opinions on chat. It'll be interactive, and we can both everyone can learn from this. Yes, font, server, too much details, here and misspelling. Yes, so the main thing is spellings here. भी सर्वर है ठीक है, बट यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट कंपनी क्या रोल है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं लिखा है, उसने बस सर्वर लिखा, फिर वहां भी सर्वर है। मतलब इफ आई लुक एट इट, तो 2017 से अभी मतलब ऑलमोस्ट जो भी मतलब 8 साल हो गए, ये बंदा सर्वर ही है, मतलब इसने बस कंपनी चेंज किया है। तो दैट इज समथिंग, तो एज आई सेड राइट, स्पेलिंग मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आजकल स्पेलिंग्स मतलब भूल जाते हैं, गलती से चेंज हो गया स्पेलिंग, कहीं पे ऑटो करेक्ट हो गया, एंड देन दे जस्ट फॉरगेट टू चेंज इट। So always make sure that your spellings are correct. Get it proofreaded by your friends, family. 15 लोग से पढ़वाओ रेज्यूमे, उनको बोलो कि ये सही लग रहा है कि नहीं, and then based on that you can decide to move forward. Okay, next slide. How about this slide? What do you feel is incorrect here? Formatting, exclusive is your wrong pick. Is it necessary to keep picture? No, Vijay, it is not necessary. So yes, in this case, sorry, yeah, in this case it is too much graphic. ये इमेज है, ये शैडो वैडो है, ये जर्नी है, मतलब if I am looking at the resume, the attention is going here only. I am not able to read what is written in the work experience. Image is also not professional. You can choose to not keep it, but if you are keeping a resume, then keep it very professional, right? तो ये जो ग्राफिक्स है, ट्राई टू कीप इट मिनिमल। नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट रखना ही है तुम्हें, मतलब आप इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब, देन मेक सेंस कि तुम रखो, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट overpower your resume. Size of the pic, it can be say around 200 by 200 pixels or something. You can determine based on your resume size. Okay, what do you think is wrong in this resume? यस, बिग मार्जिन, टू मच वाइट स्पेस। मतलब तुम्हारे रेज्यूमे पे जब तुम्हें एक ही पेज यूज करना है, तो तुम इतना सारा ब्लैंक स्पेस क्यों छोड़ रहे हो? मतलब तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, या व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट रेजेस अ फ्लैग। ऑल्सो सेम थिंग एज द फर्स्ट केस, मतलब कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तुम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ही थे, अभी भी वही हो, तो पिछले तुम 8 साल में अगर तुमने कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है तुम्हारी लाइफ में, तो दैट इज समथिंग दैट कैन बी फ्लैग. So you should have a journey that shows about how your role changed. Then coming to this, इसमें what do you feel is wrong? Font style and italics, yes. So this is the Comic Sans font. तो इसके बारे में बता रहा था मैं कि this gives a very light feeling. This does not feel a very professional resume. So in that case, it is very important to use the right font. You do not use something which is non-professional. So that is one thing that is flagged out here. I love it, but not professional. Exactly, Prithvi. How about this? Bill Jots. What about this resume? Too cluttered. Yes, it is too cluttered, and also it is 3 pages. The first thing, it is an resume, it is not an autobiography. So itna page, no recruiter or no interviewer is free to read through all of this. So ignore whatever is not relevant. Try to restrict it to just one page.
it should be very much eligible to cover until, say, I would say, if you have beyond 15 years of experience, I would say go to 2 pages. But I think until 10 to 12 years of experience, 1 page should very much suffice in terms of what have you done. What about this? Formatting, yes. तो इसमें एक्चुअली काफी सारे मिस्टेक्स है. यहाँ पे मार्जिन अजीब है, ये फॉर्मेट सेंटर में होना चाहिए, ये सब आइकन्स. एक सेकेंड. Where do I get a pointer? ओके, नेवर माइंड. तो हाँ, मतलब नाम के नीचे ये लाइन रैंडमली बीच में है, मतलब इट इज नॉट सेंटर लाइन. ये राइट साइड पे नंबर, ईमेल वगैरह के वहाँ पे ये सब आइकन्स अलाइन नहीं है. ये एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन भी अलाइंड हो सकता था. ये सब के फॉन्ट भी सिमिलर नहीं है. जैसे एजुकेशन में मई 2017 और मई 2012 का दोनों का फॉन्ट अलग है. ये जो रोल है ऑफिस इंटर्न वगैरह का, ये बहुत छोटे छोटे बुलेट्स में लिखा है. इसको एक लाइन में फिट कर सकते थे. रिस्पॉन्डेड टू मोर देन 50 क्लाइंट्स. अगेन ये रिस्पॉन्ड टू मोर देन 15 क्लाइंट्स, इट इज इन प्रेजेंट टेंस. अगर तुम्हारा प्रायर रोल है तो इट कैन बी इन पास्ट टेंस. तो ऑल ऑफ दोज एंगल्स नीड टू बी वर्कड अपॉन. बोल्ड लेटर्स इज ओके इफ यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट समथिंग, बट यहाँ पे तो सब कुछ ही बोल्ड है, तो मेक सेंस. ये डेडिकेटेड वर्कर इज ओके, बट ये पूरा एजुकेशन क्यों बोल्ड में है, दैट डज नॉट मेक सेंस. Yes, here, Benjamin Davis. Here, what do you feel is incorrect? Perfect. No, Prithvi, you do not require any validation as such. But in this resume, one thing to be highlighted is the additional skills may is put like 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 languages. So this feels like ये fake है. मतलब this, you can write something which is acceptable, but there is a very high chance कि ये बंदे को ये 12 भाषा तो नहीं आती. So make sure you always keep your resume to the point and honest. In that case, it will be very helpful. What about this? Yeah, so in this is going a bit too personal, right? Address, birth date, marital status, these are not required. Like I have seen a lot of cases where people also have that declaration line in the bottom. I so and so promise that whatever is written in this resume is correct and best to my knowledge. ये सब declaration is knowledge not required. ये personal details, address, birth date. Birth date is still okay, might be needed in some cases, but address and marital status is not required. Your hiring is not dependent on where you stay or if you are married or not married. It is available in the power of signature. Okay, so basically, just to highlight, a good resume should be very easy to read. वो ATS friendly होना चाहिए, error free होना चाहिए, or it should be focused on the relevant skills and experiences that you have and also the role that you are applying for. Bad resume is something which is disorganized, which is difficult to read, जिसमें spelling और grammar mistakes है, जिसमें distracting या बहुत सारे graphics है, information है जो relevant नहीं है, false highlights है, तो उससे basically तुम्हें job नहीं मिल पाएगा. So yes, this is what I had. You can connect with me on LinkedIn. I'll put it on the chat if you have further more questions. But any questions, we still have like 5 more minutes. And I'm here to help. Hello. Yes, Prithvi.
Yeah, like so the cover letter should be like, should be like what the cover letter should say actually, whether the love or towards like the value of the company which I feel, or something the love for the role I'm having for. So it should mention about the job title, the job ID that you are applying for. Then it should also talk about how are you a value add for that particular role, or how are you best fitted for that role. If the job, how do you align Okay. yourself with the job expectation is what you should write in the cover letter. So is it not something that like as a person, we also focus on our career, right? We generally do apply for jobs actually in a kind of a manner, whatever the jobs comes related to our role or our kind of skill sets, what we require, and for career growth. I think this is something also I feel that whether how your company, why I choose why I choose your company is in the sense that why you have to choose me is that I gonna add value to you in this kind of a skill set of Yes. particular areas and all the Yes, stuff. yes. So that is And also why something that you should mention. yes, and why you I want to I and why I choose you is that your company is like kind of a good at all this kind of a stuff, and the careerical growth in your company is somewhat very beautiful, where I have checked a few profiles. So is it all, I think, is it also must be mentioned, but if it can we mention it within a few words, because the CV generally consists of a few words. So Yeah, yeah. can we So mention that? yes, yes, yes. You can definitely mention that. Okay, thanks. Yeah. I have a backlog, so I can mention it. But if I don't mention any problem, they might ask you during your say background verification. You can reveal it at that time, but there is no need to mention it on your resume as such. Yeah, Dipanjana shared the feedback form, so please, people, if you can do that, please go ahead. Yeah. And there's also a link to the other sessions. Yeah. We come to the end of today's session. I really hope we were able to, answer the questions and clarify the doubts. Just dropping a quick reminder before we move on. But before I do that, Kupal, if you have any parting words, any last advice that you want to share with the people here. So as I said, right, keep your resume to the point. Keep it very honest. जो लिखा है resume पे, make sure कि you know 100% of it. Resume पे ज़्यादा फेंकोगे तो पकड़े जाओगे, and it will eventually get you blacklisted or not get the job. So जो लिख रहे हो, make sure you know what you are writing and be very honest, and it will all work out. Give it time, give it patience, and it will all work. Yeah, thanks, Kumpal. So while we come to the conclusion, I'll quickly drop a couple of reminders here. So first thing, since this is a resume-based session, if you go to our website, I've shared a link here as well for the resume builder. So you can use that to create your resumes. You can also check your ATS score. Like these tools are using AI to, create custom templates for you, create custom resumes for you. So make sure to give it a check out and see if this helps in your job search. Secondly, I've And yeah. okay. So do we have such kind of a thing like when that depends on job description and our resume, the evaluational score regarding the Yeah, perfections, and what are the perfectionisms to be added so that we yes, can get selected? Do we have yeah, that even? yeah, you can get that. Like you can have conversations and let them know that this is the job I'm applying for. These are the key skills they're looking for, and accordingly help me with the CV. So it'll help you out and create the. It's very similar to how you have conversations with Chat GPT. So similar kind of approach you can take here, and yeah, Okay, you can give it beautiful, a try and beautiful. see if it helps out. Sure, I But do. yeah, Thank you. sure. And I've shared the feedback form here, so do let us know how you found today's session, and if you have any suggestions for us to, host sessions on any particular topics that you want to see, let us know through the form. I've also shared the link to the website where you can find the recording of this session shortly, and you'll also find recordings of other sessions that we've done in the past, and we also list out any upcoming sessions that are that you can register for. So yeah, do make sure to check these out, and thank you so much everyone for coming in and making this a successful session. I hope everyone has a great night. Thank you so much, everyone. Have a great day. Bye. Thank you, everyone. Bye bye.